Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. On behalf of TNT Forum, I welcome you all on this third webinar session. Today in this session, we will cover eco station of talks. Keeping our promise to have experts of their respective field on subsequent talk, today we have with us Dr. Lubna Bakai as a speaker. Dr. Lubna Bakai is working as an assistant professor of cardiology in Thabba Heart Institute, and she is also board certified of echocardiography and nuclear cardiology, sorry. She is one of the expert in her field in town and very academic person. With on expert panel, we do have Dr. Mohammad Khalil Iqbal Sahab, who is fellow of College of Physician and Surgeon Pakistan and working as an assistant professor of cardiology in AIMC and Jinnah Hospital, Lahore. Thank you very much, Dr. Lubna Bakai and Dr. Khalil Iqbal, to have with us and sparing your time for us in your very busy schedule in this pandemic. I welcome Thank you, you, sir. both of you. Thank you. Thank you, Hashim. Thank you. So now, as we are already read, without any further delay, let me take you to Dr. Lubna Bakai, who will give her talk on eco station of talks. Yes, over to you, Dr. Lubna Bakai. Thank you, Hashim, for such a comprehensive introduction. I will like to this session a more sort of interactive because the Echo Talks exam is a preparatory session for the candidates who are appearing in the coming exam. I will like to have Dr. Mohammad Khalil Iqbal Sahab to give some comments on echocardiographic stations of talks. Yes, Dr. Khalil Sahab, over to you. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Talks is a thing that is some dodging always. So being prepared, along with the being prepared, you also be ready कि आप जो है वो at that time when you are doing your examination, you are using your general sense and general knowledge, because many a times you have seen the things in your OPD, you have seen the things in your echo lab, and you are a bit nervous at the examination, in the examination. So first of all, you see which modality is it. It is the stepwise approach. You see which modality is it, whether it is transthoracic echocardiography, it is transesophageal echocardiography, it is ECG, it is the thallium scan, anything else. So first you see the modality, which modality is it, and then another in the next step you diagnose, you see which view is this. In echocardiography, it is very necessary that you distinguish the view, and sometimes there are modified views, of course. When you see this view, you diagnose the view, then you elaborate which are the normal things which can be visualized in this view. And when you diagnose that, which things you see in that view, and then you come to the pathology. So this is stepwise approach. If you are not, अगर आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये व्यू कौन सा है, तो आपको नॉर्मल फाइंडिंग्स, नॉर्मल जो चीजें उसमें नजर आती है वो भी नहीं पता चलेंगी. और अगर आपको ये नहीं पता चला तो फिर आप उसकी पैथोलॉजी डायग्नोज नहीं कर पाएंगे. So this is the stepwise approach. Although you have a much less time, you have only 3 minutes in the talks. For one slide you have 3 minutes, and you have to not only diagnose but answer the questions. Once you have answered the question, then you will get the number. Sparing your time for us in your very busy schedule in this pandemic. I welcome you, both of you. Thank you. Thank you, Hashim. Now, without as already now. Dr. Hashim? Yes. Are you saying something? No. That the sound was
there was an echo of sound. That's why you were hearing my अच्छा, sound in the ठीक background. है, ठीक है. You can continue, ठीक है. Dr. तो Khalid sir. दिस इज द थिंग. नंबर 1 के जनरल नॉलेज, ओपीडी में जो आपने पेशेंट देखे होते हैं एको लैब में, वही आते हैं आमतौर पे. और आप हमेशा ये सोचें कि हमें जो चीजें आ रही हैं वो नॉर्मल होंगी. कोई डिफिकल्ट चीजें ज़हन में ना रखें कि जी ये डिफिकल्टी पूछ रहा होगा. ठीक है. और मोर ओवर के एक स्टेशन आपका व्हेन इट गेट्स रॉन्ग, तो ये ना सोचते रहें अगले स्टेशन पे दैट कि जी मैं तो रह गया. ठीक है. गो ऑन डूइंग ऑल द स्टेशंस. द गेम इज नॉट ओवर इवन एट द लास्ट स्टेशन. तो आप कीप होप. यू हैव टू आंसर 60% of the stations. Means 60% means 24 stations out of 40 stations. And not all the stations are negative. मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक स्टेशन पर डायग्नोसिस रॉन्ग दे दी है तो वो सारा स्टेशन आपका गलत हो गया. You even then get some scores from that station because जो उसके जो पार्ट्स होंगे क्वेश्चन के, उनमें से कुछ क्वेश्चन तो आपको कोई पार्ट तो आपका ठीक होगा ना. तो दिस इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप. ये हमेशा जो है वो आपकी वहां पे कोई ना कोई आप आंसर जो है वो आप एंड तक जो है वो आप यू कैन विन द गेम. तो इफ सो डोंट थिंक कि जी ये जनाब आपका रह गया एक स्टेशन या 2 स्टेशन या इवन 3 स्टेशन. फाइट टिल एंड ऑफ द मैच. नंबर 1. Number 2, that many a times general knowledge helps you, and many a times the question scenario, the question you read, if अगर आपको पता नहीं चल रहा कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है तो आप उसके क्वेश्चन सिनेरियो पढ़ें. नीचे सिनेरियो क्या दिया है पेशेंट का, क्वेश्चन क्या है. समटाइम्स क्वेश्चन हेल्प्स यू टेक आउट कि जी इसमें चीज क्या रन कर रही है. एको है, ट्रांसथोरेसिक है, सिग्नल एवरेज ईसीजी है, आईसीडी की कोई वो है, आईसीडी की रिकॉर्डिंग बाजू का रख देते हैं. ठीक है ना. एंजियोग्राफी है, व्हाटसोएवर इट इज. तो पहले ये मोडालिटी, देन व्यू, विच व्यू इज इट, और फिर उस व्यू में कौन सी नेचुरल चीजें नजर आती हैं नॉर्मल, और फिर उसके बाद कि वो नॉर्मल चीजों की पैथोलॉजी. मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे पैरास्टर्नल. Hello? Yes, we can hear you, Dr. Khalil. You can continue. जी सर, आवाज आ रही है? हाशिम साहब. हाँ. Yes. हाँ, मैं एग्जांपल दूंगा. मैं एग्जांपल दूंगा कि जो सब कोस्टल व्यू जाए वो डॉक्टर लोगना की रन कर रहा है तो सब कोस्टल व्यू में कौन कौन सी चीजें नॉर्मली नजर आती हैं, कौन सा सब कोस्टल हो सकती है. अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन, ये मतलब लिखते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट लगती है वो ऊपर लिखते हैं. ठीक है. उसके अलावा कि आप ज्यादा से ज्यादा जो अगर आपको कोई मसलन ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं तो अगर कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन दूसरी भी हैं